Welcome to today's episode of the Be Sure podcast. Living with epilepsy involves challenges beyond seizures, including stigma and emotional impact. However, with the right treatment and adjustments, many people with epilepsy can lead active lives. To help us better understand this, we are fortunate to have a renowned consultant neurologist with extensive experience in treating epilepsy. Welcome, Doctor. या मैं डॉक्टर नवनीत अग्रवाल डीएम न्यूरोलॉजिस्ट practicing in Agra in Sikandra location. Let's start with the basics. What exactly is a seizure and how does it affect the brain? बेसिकली एक्चुअली जब भी ब्रेन कोई बात प्रोसेस करता है, कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है या किसी ब्रेन के किसी एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक कोई इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज़ करता है। तो जब भी कोई ब्रेन के किसी हिस्से में बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है एंड ओवरफ्लो होता है, तो वो सीज़र के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिसमें पेशेंट झटके लेता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो दैट इज़ बेसिकली अ सीज़र। What is epilepsy? अ, तो इसी का नेक्स्ट रूप लेते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी एक मेडिकल कंडीशन है, बेसिकली न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जिसमें 2 या मोर देन 2 अगर पेशेंट को सीज़र होते हैं, तो हम उसको एपिलेप्सी लेबल कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई रूप और होते हैं, जैसे चाइल्डहुड एपिलेप्सी सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट को अगर एक भी सीज़र है, लेकिन डॉक्टर को लगता है कि अ, उसमें फर्दर चांस है इवैल्यूएशन में, जैसे एमआरआई में या ईईजी में इस तरह का आता है कि उसको 2 या 2 से सीज़र आ सकते हैं, तो भी डॉक्टर उसको एपिलेप्सी लेबल कर सकता है। What are the different types of seizures and do they affect people differently? Yes, agar broadly speaking, there are two types of seizure we can say. One is generalized, one is focal. Generalized means ब्रेन की एक एक्टिविटी किसी एक हिस्से से सीजर एक्टिवेट हुआ, बस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वो पूरे ब्रेन में स्प्रेड हो गई, एंड उसी तरीके से जब जनरलाइज्ड हुआ तो पेशेंट विल बिहेव इज पेशेंट विल हैव दोनों तरफ के हाथों में, दोनों तरफ के पैरों में पेशेंट विल हैव टोनिक क्लोनिक एक्टिविटी, पेशेंट को झटके लगेंगे दोनों तरफ, वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, इनकंटिनेंस होगा, यूरिनरी इनकंटिनेंस, लाइक पेशेंट यूरिन पास कर देगा विदाउट अवेयरनेस। दैट इज जनरलाइज्ड। अदर इज फोकल। फोकल मीन्स पेशेंट में हैव अवेयरनेस एंड उसके किसी एक हिस्से में, या तो कोई एक हाथ हो सकता है, कोई एक पैर हो सकता है, कोई फेस में हो सकता है, ट्विचिंग हो सकती है, तो वो एक्टिविटी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, तो दैट इज फोकल एपिलेप्सी। Okay. Broadly, these are two types of seizure we can say. I see. Now, can you explain what causes epilepsy? Is there always a known cause? Yeah, we can say around 50% of the time we may not found any cause. 50% we may found a cause on evaluation. Most of the time causes are like any infection, any stroke, any head injury, old injury, uh, any even tumor can cause epilepsy. These are common causes which can the life can create epilepsy. Well, that's really helpful to understand. Well, what are some of the signs or symptoms of epilepsy that caregivers should look out for? Yeah, like we spoke, um, इन जनरलाइज्ड एपिलेप्सी पेशेंट को दोनों तरफ से झटके आते हैं, तो दोनों हाथ पैरों में झटके लेना, बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना, यूरिन पास हो जाना, टंग बाइट हो जाना, these are some common sign most of the people now getting into this. बट इन एडिशन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो एपिलेप्सी होती हैं और जिनका लोगों का ध्यान नहीं जाता उस तरफ, जिनको हमको ध्यान रखना है, जैसे कि किसी एक हिस्से में ट्विचिंग होना, झटके आना, स्टेयरिंग लुक होना, पेशेंट एकदम सामने दिखेगा फॉर ब्रीफ सेकंड्स एंड मिनट्स, दैट इज आल्सो बी पॉसिबल कि दैट इज आल्सो एपिलेप्सी। लॉस ऑफ अवेयरनेस, सम
fear होना एकदम से sudden patient will have 1 or 2 minutes of fear and confused state. That is also maybe part of epilepsy. Now, let's talk about something that many people with epilepsy face: stigma. Can you tell us why epilepsy is often misunderstood? Yes. uh, Actually, for a long time, uh, for unknown way, it is not known कि epilepsy is any neurological condition, and some superstitious condition was thought of that epilepsy. That is the reason कि uh, there is lot of stigma in the epilepsy. Whenever any patient will have a seizure, some sort of superstitious things will be done. So that is actually a part, and that is historically it is due to not knowing the epilepsy well in long run. Absolutely. Now, let's move on to managing epilepsy. What are the common triggers for seizures that patients and caregivers should be aware of? Yes, that is very important thing. Every patient have different trigger for himself. Some common triggers are lack of sleep. If a patient is not sleeping well in the night, and he or she may have a seizure in the next morning. Other thing is, if a patient is having stress is very common cause of that precipitation of the seizure. Patient having, if fatigue, patient is doing many fatigable job, or he is having very exercise very patient has done very long run of exercise, he may have fatigue and he may have precipitate of seizure. If a patient, most common cause of that seizure precipitation is not taking medication. That patient should have this keep in mind ki always and always patient should not miss the seizure medications. And other things that can precipitate, like flashing of lights. If there is flashing of lights or any bheed bhaad wali jagah, that can also precipitate the seizure. That's a great tip, doctor. What other lifestyle adjustments can help someone manage epilepsy? Like I told ki there are these are triggers. So keeping in mind of these triggers, we should change the lifestyle, like sleep. First we talk about sleep. We should take proper sleep. Then exercise, and we should uh, keep ourselves active, and we do regular exercise, but we should not like over exercise and keep yourself fatigued. And we do should have proper and balanced diet and keep yourself hydrated, because dehydration can also precipitate the seizure, and we should keep yourself hydrated. These are the common and stress I told. Then uh, for stress management, yoga, meditation, these are common basic lifestyle changes that we can do and avoid the precipitation of seizure. Thank you so much, doctor. To wrap up, could you share some safety tips to help prevent injuries during seizures? Yes, basic some small thing we can help and avoid the big injury. So some things commonly we can do. Okay, if in bed or in table corner, we can do padding, and in first also we can do soft carpeting. And if a patient is alone in the home, घर में अगर वो अकेला है या अकेली है, तो उसको रादर देन यूजिंग स्टोव और गैस, वो इलेक्ट्रिक माइक्रोवेव टाइप की चीजें को यूज करके खाना बनाना या उसको हॉट यूज कर सकते हैं. तो दीज आर बेसिक स्मॉल थिंग्स. उसके अलावा सीजर वाले पेशेंट्स को इट इज एडवाइजेबल कि वो ड्राइविंग या स्विमिंग जैसी चीजों से, स्पेशली अगर अभी हाल में सीजर हुआ है एंड अनकंट्रोल्ड है, तो इन चीजों से दूर रहना चाहिए. Thank you so much, doctor. This has been incredibly informative and helpful. We hope today's discussion
helps listeners better understand epilepsy and how to support themselves or their loved ones, of course. यस, एपिलेप्सी को हमको एज ए मेडिकल कंडीशन की तरफ देखना चाहिए। एक सिंपल एक मेडिकल कंडीशन है जिसका हर संभव इलाज है। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स डू वेल विद प्रॉपर मैनेजमेंट। तो अगर सही तरीके से सही ट्रीटमेंट मिलता है तो पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। लेकिन और जो भी स्टिग्मा है उसको एक साइड में रख के पेशेंट की एपिलेप्सी के उसको सपोर्ट में आना चाहिए, बिकॉज़ दे आर नॉट अलोन, होल सपोर्टिव सिस्टम इज़ विद देम। Uh, any negative attitude will not help the epilepsy patient. We should always keep this in mind. Any final thoughts? Yes, like these are the awareness program we should run more frequently so that patient may know better about the epilepsy. Nowadays, the patients are becoming more aware of some special generalized type of epilepsy, but they may not be aware of some special focal epilepsy. We can do that also, and what we should do and what we should not do, that keeping in that mind, more awareness program we can run. Thank you, Doctor. And thank you to our listeners. Until next time, take care and stay informed.